Now we have come here with the video which covers the circular of CBSE board released on 5th July 2021. This circular has enhanced the perplexity of the students of CBSE board who are studying in class 10th and 12th. The reason: alteration in exam pattern. The alteration in the examination patterns have been completely explained by the board. We have to go through it one by one, as the alterations which are to be followed in the examination are noticeable, reasonable. The students must know beforehand, as they are going to face the examination in December, November and December, and the second term in March and April. So I have the circular in hand of the CBSE board which was released on 5th of July 2021. What are the alterations? Let's go through it one by one. First of all, the examination of board will be divided into two different terms, term 1 and term 2. Term 1 examination, first try to understand, first term examination will be conducted in November and December 2021. It will cover the duration. Examination duration will be of 90 minutes on the OMR sheet. The response of the students will be given on the OMR sheet, whereas the question paper will have multiple choice questions. The syllabus for the examination of the first term will be approximately 50% of the whole syllabus. Whole syllabus will be divided into two different 50-50. The first 50 of that syllabus will be covered in the first term examination of the board to be conducted in the month of November to December. After that, the questions will be based on case-based assertion reasoning. When the questions will be selected in the question paper of the first term covering multiple choice questions, they will be based on different patterns: case-based, assertion reasoning based questions with multiple choice questions. The response will be noted on OMR sheet. The OMR sheet is a different type of sheet, a single page with the number of questions. The detail of the students will be on the top of the OMR sheet. This is OMR sheet is an optical sheet which is read, which is recognized by computer, in having a particular software for that. This OMR sheet of the students responded will be uploaded on the same day by the representative of the board, or after evaluation the school itself will upload OMR sheet with the marks of the student on the same day. That should be kept in mind, that OMR sheet will not be delayed in uploading on the CBSE portal. Now let's know about the second term. How will be the examination of the second term to be conducted in the month of March and April 2022. The examination of the second term will be conducted in the month of March and April, having the time duration of 2 hours. The questions will be subjective type questions covering 50% of the syllabus. The questions will be based on case-based questions, situation-based, open-ended, short answer type and long answer type questions. This will be the situation, this will be the condition for the students how to cover their syllabus for different terms.
And another thing which is very important to be kept in mind, that there will not be any overlapping of this 50% of the marks in the next term, second term, to be conducted in the month of March and April 2022. This 50% will remain in the first term and will not overlap here. This will not come to this side. It will not come to this side. This 50% will not go this side. This will not come here, or it will not go there. It's very clear that the students should have to achieve good marks if they prepare well. It's based on the preparation that you can achieve excellent marks in the board examination, because you have to prepare 50% of the course, approximately 50% of the course for the first term, and then leave it and prepare for the second term examination. Now observe the weightage system of both the term examinations of CBSE board. If the students are able to take examination at centers allotted by the board, both sides in both the terms, the weightage of both the examination will be the same. 50-50 makes 100%. If the students are not able to come to centers in the first term and not able to come to the centers in the second term also because of COVID-19 pandemic, then the weightage will be equal for both the examination, adding practical project internal assessment marks given by the schools. Practical project internal assessment with the two examination marks of these two examinations will be calculated to make the final result of the students of board class 10th and 12th. Now try to understand next situation. In the first term, the student is able to come to center, but here is not able to come to center. The value of the second term will be decreased. A student reaches to center in the first term, not able to reach to centers because of pandemic, not intentionally, not deliberately by himself, but declared by the board because of the situation caused by pandemic COVID-19. Students are able to reach the centers or not able to reach the centers. The value of the second term will be decreased if students are not able to reach the centers allotted by the board. Again, if the students are not able to reach the centers in the first term examination but able to come to centers in the second term examinations, then the value of the first term will be decreased. Try to understand this. Not able to come to centers, the weightage of this will be high because students are able to reach the centers. The value of the exam taken at the examination centers will have more value, increased value in comparison to the first term examination. Unable to come to centers, here its value will be increased and the value of this will be decreased. इस तरह से ये एग्ज़ाम के बारे में जो कुछ सर्कुलर में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। ओवरऑल फिर से एक बार आपको बोल देते हैं कि जो सर्कुलर सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है, ये स्टूडेंट के माइंड को परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड करने वाला है जब तक वो समझते नहीं हैं। समझने के बाद ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, विल बी आइस ऑन द टॉप ऑफ द केक। कैसे होगा? क्योंकि 50% कोर्स कवर किया जा रहा है फर्स्ट टर्म में, 50% कोर्स कवर किया जा रहा है सेकंड टर्म में। देयर विल नॉट बी एनी ओवरलैपिंग, द चैप्टर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म विल नॉट बी कमिंग टू द सेकंड टर्म एग्जामिनेशन।
उसमें दूसरे वाले में उसको नहीं ले आया जाएगा, वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के साथ क्लोज्ड हो जाएगा और फिर इधर का कोई ओवरलैपिंग इधर को भी नहीं हो सकता है। इसके बाद मार्क्स जो होंगे वो बराबर बराबर बटे होंगे। 90 मिनट दिया जाएगा OMR शीट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देने के लिए, जिसमें एक सही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके उस पर नोट डाउन करना पड़ता है, उस पर मार्क करना पड़ता है OMR शीट पे। तो 90 मिनट में आपको ये कंप्लीट करके आपको OMR शीट सबमिट करना है और OMR शीट जो सबमिट की जाएगी उसको चाहे तो पोर्टल पे CBSE अपने रिप्रेजेंटेटिव से अपलोड कराए या फिर स्कूल में खुद इवैल्यूएशन के बाद सेम डे पे उसको अपलोड किया जाए पोर्टल पे। दूसरी तरफ सेकंड टर्म में हमने आपको बताया कि 2 घंटे इसमें टाइम रहेंगे। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको आंसर कॉपी पे लिखना पड़ेगा, OMR शीट नहीं होगी अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो। अगर सिचुएशन नहीं ठीक रहती है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक कोविड-19 तो फिर आपको वही OMR शीट पे 90 मार्क्स के क्वेश्चंस 90 मिनट में क्वेश्चंस करने के लिए सेम वैल्यू का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसको आपको उसी टाइम लिमिट में 90 मिनट्स में कंप्लीट करके देना पड़ेगा। और फिर जब आप ये समझ रहे हैं कि जब इस तरह से कर दिया जाएगा तो आगे इसके इवैल्यूएशन की वैल्यू और वेटेज क्या होगी, इस वेटेज को बताने के लिए हमने ये एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में समझने के लिए कि अगर स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच पाता है इस साइड भी और इस साइड भी तो दोनों का 50-50 वेटेज होता है, दोनों मार्क्स जो मिलेंगे उनकी बराबर की वैल्यू होगी। अगर स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते सेंटर पे ना इधर कोविड-19 बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें अलाउ नहीं किया जाता स्टूडेंट को वहाँ स्कूल के अलॉटेड सेंटर्स पे पहुँचने के लिए, तो CBSE डिक्लेयर करेगा पहुँचना है नहीं पहुँचना है। नहीं पहुँच पाते दोनों साइड में तो इस दोनों के मार्क्स इक्वल वेटेज में होंगे, लेकिन इसमें कुछ एडेड चीज़ें हो जाएंगी। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और ये दोनों टर्म एग्जामिनेशंस के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी इसमें एडेड होंगे। अगर फिर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में पहुंच पाता है, सेकंड टर्म में नहीं पहुंच पाता है, तो इधर की वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर की वैल्यू घट जाएगी। इसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, जो नंबर होंगे उसकी वेटेज ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। और अगर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म में घर पे ही एग्ज़ाम देते हैं, सेंटर पे नहीं पहुँचते लेकिन सेकेंड टर्म में पहुँच जाते हैं, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू will be more than the first term examination. It was all about board examination and I hope that you have understood it all. The circular released by the CBSE board 2021 for the examination 2021-22. अब इसके बाद तैयारी की बात है, जहां पर वो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है अगर आप बहुत प्लान्ड वे में तैयारी करते हैं। 50% कोर्स को अभी फर्स्ट टर्म के लिए पकड़ लीजिए और उसमें जो आप पढ़िए वो रट्टा मार करके नहीं, बल्कि क्वेश्चंस को समझ करके उसमें जो रीज़न है, जो फैक्ट हैं, इंफॉर्मेशन है, उस पे ज़्यादा आप काम करेंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू prolong this video and I hope that you have understood it all. If you liked it, don't forget to share it to your friends who can also be benefited, who can also get helped from this video on the circular of CBSE 2021.